Good morning, all of you, and welcome to Ansarkari. So let us quickly start with today's analysis video for 1st of May 2023. So firstly, we are seeing कि 11 people they died after inhaling a toxic gas in Ludhiana. So कौन सी gas है, उसके क्या features, क्या characteristics है, वो important हो जाते हैं. So here the gas is hydrogen sulfide. So NDRF air quality sensors, they have detected high levels of hydrogen sulfide, but the source of the gas, it is yet to be identified. And victims, they were from 3 families, all hailing from UP and Bihar. So you can see in this picture a National Disaster Response Force team at the site of the gas leak in Gyaspura area of Ludhiana. So hydrogen sulfide is the gas, and apart from that, we need to know about what are the powers of NDRF in such cases. And then there is also this National Disaster Management Authority. So the structure and the composition, that becomes important with this incident. So here, let's just spot agar gas ke kuch properties mentioned hai. And inquiry, it has been ordered. So you can Google and find out the properties of hydrogen sulfide. Apart from this, DGCA issues notice to CEO Safety Chief of Air India. So Directorate General of Civil Aviation, it has issued a show cause notice to Air India CEO for the airline's lapses in reporting the incident of a pilot allowing a woman friend inside the cockpit during the Dubai to Delhi flight. So safety concerns, they were compromised, and because of that, an issue has been ordered to Air India because this is a violation of the safety instructions. Moving forward, Man Ki Baat marked 100 episodes, so it completes 100 episodes. So इसके perspective में हमने एक दो दिन पहले देखा था कि कुछ important historical sites हैं which were named in that advertisement. So examination perspective से वो हमारे लिए important हो जाता है. Apart from this, there was one article yesterday जो बात कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने किन किन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा मेंशन किया है ड्यूरिंग हिज मन की बात रेडियो एपिसोड्स. सो वो भी टॉपिक्स हमारे लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. Then happening Haryana, it slips as we see key investment is dropping because of the law over the reservation of jobs for the locals. So Haryana में we saw कि जो reservation आई थी कि 75% of the people जो काम करेंगे in the private sector jobs, they would be from Haryana. So here you can see कि उसकी वजह से investment हरियाणा में fall होती हुई दिखाई दे रही है. एंड यहाँ पे अगर हम डेटा को समझने की कोशिश करें तो शेयर इन इंडिया एंड हरियाणा का ऑब्वियसली प्रोपोर्शन दे रखा है, शेयर दे रखा है. सो ईयर 2021-22 में 244 प्रोजेक्ट्स थे, कॉस्ट वाज अराउंड ₹55,000 करोड़ एंड शेयर उस टाइम पे था 2.89%. तो हम बोल सकते हैं 2.9% या अप्रोक्सीमेटली 3% वाज द शेयर. 2022-23 में हरियाणा का इन्वेस्टमेंट शेयर जो है पैन इंडिया लेवल में हम बात कर रहे हैं, इट हैज स्लिप्ड डाउन टू 1%. सो ये impact देखा जा रहा है of this law, and decline in the fresh projects in the state, it coincides with the enactment of a law in early 2022 जहाँ पे 75% of the private sector jobs वो reserve की गई थी with the monthly salaries of up to ₹30,000 for the local people. तो जहाँ पे salaries 30,000 है सिर्फ उस area में 75% of the reservation the private sector goes to the local people of Haryana. And so that is the impact of this law. So हमने यहाँ पे शेयर की बात कर ली, वो एक important चीज हो गया. Earlier it was approximately 3%, it has now fallen down to 1%. And इसके अलावा 60% is the percentage by which investments they fell in the manufacturing projects. इतना decline हमें manufacturing projects के investments में देखने को मिला. 8% is by which the investments they have dipped in irrigation projects. So that's the whole picture as far as investment in the state of Haryana is concerned. So definitely जो investors है, they would now be moving to the neighboring states and they would be benefiting out of this trend.
सो लैंडफिल साइट्स और उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम हमेशा बात करते रहते हैं, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस गाजीपुर लैंडफिल साइट. So with a deadline to flatten the garbage mountain set for March 2024, landfill in the East Delhi that reached its saturation point in 2002, it continues to get the fresh waste, and MCD blames the contractor for delayed progress. तो लेगेसी वेस्ट है जो प्रोसेस किया जा चुका है, यहाँ पे डेटा दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड डिफरेंट लैंडफिल साइट्स जो दिल्ली में है मेंशन की कर रखी, मतलब गाजीपुर है, ओखला है, भलसवा है. सो यहाँ पे हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के बारे में बात कर चुके हैं, उसको डिप्लॉय करना, बट अगेन दैट इज लाइक इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव है, उसमें पैसा हमें काफी चाहिए. उसके अलावा हर टाइप का वेस्ट हम उसमें यूज नहीं कर सकते वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में. उसके अलावा जो लिमिटेशन है या जो स्टेप में हमें चैलेंज आ रहा है व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट इज रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन एट द लाइक हाउस होल्ड लेवल. तो अगर वहां पे लैंडफिल बेसिकली वेस्ट को सेपरेट किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मेडिकल वेस्ट, सो दैट वुड मेक थिंग्स मच मोर इजियर व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग दिस वेस्ट प्रॉब्लम. इसके अलावा जो गाइडलाइंस है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं, वो हमें पता होना इम्पोर्टेंट है. ई वेस्ट से रिलेटेड हो गया, सो कैटेगरीज ई वेस्ट में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, क्योंकि वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो दैट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव फॉर अस. एंड मूविंग फॉरवर्ड, सो हियर everything is like political news on these pages, so that's why we skip them every day, except अगर एक दो हमें कुछ important news मिल जाती है तो. So copper plates they bring into focus Shilabhatrika and her pottery. So Shilabhatrika, copper plates and the pottery. So picture में this is the Varaha seal of the Badami Chalukya ruler. So Chalukyas of Badami, South India में this is the Varaha seal. Okay, so let's find some important details. We are seeing key reconstruction of the history, particularly that of the ancient world where sources बहुत कम थे and they were far away. That is often likened to detective work. So researchers at the Pune-based Bhandarkar Oriental Research Institute, which houses the South Asia's largest collection of the manuscripts and rare texts, they have recently embarked on a mission after which they have claimed to have shed new light on Shilbhatrika. So she is the celebrated Sanskrit poetess of ancient India by establishing her as the daughter of the famed Chalukyan emperor Pulakesin II of Badami, and this was in the modern day Karnataka. तो इसको फिर से एक्सप्लेन करते हुए, सबसे पहले जो साउथ एशिया का लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स है और रेयर टेक्स्ट है, दैट इज देयर विद द भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में बेस्ड है. इसके अलावा दे हैव लाइक एम्बार्क्ड ऑन अ मिशन जहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया है रिगार्डिंग शिलभद्रिका. सो शिलभद्रिका शी इज अ पोएटिस एंड संस्कृत पोएटिस टू बी स्पेसिफिक. तो they have discovered कि she was a daughter of Pulakesin II and who was a very famous ruler या emperor of Chalukyas of Badami, जो कि modern day आज के modern day कर्नाटका में ancient times में था. So this is one discovery and obviously naturally Chalukyas of Badami वैसे भी बहुत important है. So this is one development. And following the decoding of inscriptions on the copper plates earlier this month, so उन्होंने ये discover किया है by decoding या deciphering जो copper plates पे in the form of seals exist करती है, उनको decipher किया है, and from that they have discovered with this linkage of Shilbhatrika being the daughter of Pulakesin II. So here they have said again same thing, discover की गई है through this script Varaha seal. And she यहाँ पे लिखा possibly she can be the daughter of Pulakesin II जिन्होंने rule किया from 610 to 642 CE. So उनका time period भी given है, and had defeated Harshvardhan of Kannauj in a battle near the banks of Narmada river in 618 CE. So Pulakesin II ने हर्षवर्धन को भी हराया है in battle of Kannauj जो
सॉरी नॉट बैटल ऑफ कन्नौज बट हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज एक बैटल में उनको हराया है जो बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर पे था 618 सीई में। इसके अलावा संस्कृत पोएट क्रिटिक Rajshekhara, who lived in the 9th or 10th century CE and was the court poet of Gujjar Pratiharas, had praised Shilbhatrika for her elegant and beautiful compositions. So एक और important poet है संस्कृत poet Rajshekhara जो 9th or 10th century CE में थे and he was the court poet of Gujjar Pratiharas. So even he praised about Shilbhatrika because of her elegant and beautiful compositions. Then Marathi poetess hai Shanta Shelke. She too has drawn inspiration from Shilbhatrika's verses to compose one of her most iconic songs. And the name is mentioned here, that is, it is the same moon in the sky. So it has been mentioned over here. So copper plates again, seals को decipher करते हुए we are seeing कि Shilbhatrika, she might have lived in the 7th century CE rather than the current theory. So current theory ये बोलती है कि she was the wife of 8th century Rashtrakuta ruler Dhruv. So this is the current theory, but अभी ये new discovery हुई है, तो that is a possibility कि she might have been the daughter of Pulakesindra too. मतलब ये 100% surety नहीं है. So that becomes important and Varaha seal हो गया important. Varaha का मतलब होता है बोर. So that's a seal जो discover की गई. So it is Varaha seal जो है ये trademark था बादामी चालुक्यास का and charter it contained Sanskrit text जहाँ पे 65 lines inscribed थी in the late Brahmi script. So Brahmi script Varaha seal है. Varaha seal एक trademark था बादामी चालुक्यास का. Varaha means बोर. So that's the important details and facts regarding that. So that's all the important information as far as this is concerned. Moving forward and coming to the editorial page. So SDG goals की बात की जा रही है. India, its SDG pledge goal and the strategy to apply. So India की क्या strategy है as far as fulfilling these SDG goals by 2030 is concerned. So Prime Minister, while addressing the first meeting of the Finance Minister and the central bank governors under India's G20 presidency, जो recently 24-25 Feb को हुई थी, expressed concern कि जो progress है on sustainable development goals, it seems to be slowing down. So this is the concern जो Prime Minister ने express किया था. Regardless of the global progress that has been made to date, the sheer population size of India means कि realizing SDG goals at a global scale is intrinsically tied to the success of India. Obviously, that's very natural. And there is considerable confidence in India becoming the third largest economy in the world over the next decade. So again, we are aspiring for this. Right now, India is the fifth largest economy. And however, translating this growth into progress on the social and human development, that must be equally valued. So social and human development पे जो हमें goals meet करने हैं, जो target हैं, achieving them is equally valuable क्योंकि हम economic development, economic growth की बात हमेशा करते रहते हैं. तो social and human development at the same time is very, very important. So इस perspective से अगर हम देखें, so Prime Minister's concern, they deserves immediate attention. So SDG goal में जो इंडिया की progress है, there is no doubt कुछ countries से we are way forward, but again अगर हम specifically India की बात करें तो हमारी progress compared to previous times या earlier times it has been slowing down. So that's a concern for us. So यहाँ पे बात करते हुए India's progress that is mixed, जैसे कि अभी मैंने आपको explain भी किया, SDG goals की हम बात कर रहे हैं, पता होना चाहिए यहाँ पे कितने total SDG goals हैं, कब से they have been implemented, क्या target year है, and हर goal मतलब sequence wise भी पता होना important है. So SDG framework, it sets the target for 231 unique indicators हैं total. 17 SDG goals हैं which are related to economic development, social welfare, environmental sustainability. Target year is by 2030. We have to meet and we have to complete all those
goals. So roughly we are halfway to the deadline, and where does like India currently stands with regards to the progress on these indicators is the question. So lessons definitely COVID-19 की pandemic time से जरूर हैं कुछ lessons जो हमारे लिए important रहे, and उसमें से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन अगर हम बात करें ब्रॉडली तो दैट इज इंडिया को जो कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स था, दैट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियाज एबिलिटी टू डिलीवर एट scale for its population. So since India is going to the most populous country in the world this year, so COVID-19 response जो रहा government का, how मतलब collaboratively and in a proper coordinated manner we worked, it shows कि India short time period में भी large scale पे चीजें deliver कर सकता है. So ये SDG goals के केस में भी हम adopt कर सकते हैं. So good news is कि India it is on target to meeting 14 of the 33 SDGs. So 14 SDGs की अगर हम बात करें तो we are on a right path. We are like on target as far as 14 SDGs is concerned, including indicators की बात हो रही है like neonatal and under 5 mortality, full vaccination, improved sanitation and electricity access, all of which they have substantially improved in the last 5 years. So in areas में हम अच्छे से progress कर रहे हैं, but unfortunately the national on target destination it does not apply equally across all the districts. But अगर हम इन specific goals की भी बात करें तो वहां पे हमें रीजनल डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है. सो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म. जब हम मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स की पैन इंडिया लेवल पे बात करें तो कुछ डिस्क्रिपेंसी जरूर देखने को भी मिलेगी, बिकॉज इंडिया इज सच अ ह्यूज कंट्री, देन पॉपुलेशन एक दूसरा चैलेंज है, तो कुछ डिस्क्रिपेंसी जरूर विजिबल हैं. और न्यू नेटल एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी दे आर करंटली बोथ ऑन टारगेट. एंड इसके अलावा indicators like eliminating adolescent pregnancy, reducing multidimensional poverty, and women having the bank accounts, financial inclusion की यहाँ बात हो रही है, वो भी improve हुए हैं across vast majority of districts between 2016 and 21. So यहाँ पे भी improvement देखने को मिली है. इसके अलावा जहाँ पे हमारे लिए कंसर्न का एरिया है दैट इज 19 जो टारगेट्स है 33 एसडीजी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो 19 में वी आर लाइक लैगिंग बिहाइंड. वहां पे इम्प्रूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई है. सो डिस्पाइट वी आर हैविंग द नेशनल पॉलिसीज लाइक फॉर क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, मोर देन 2/3 ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दे आर ऑफ टारगेट इन इंडिया जहां तक कि क्लीन कुकिंग फ्यूल की बात करें. सिमिलरली 415 एंड 278 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ऑफ टारगेट है जहां तक कि इम्प्रूव्ड वाटर एंड हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज की हम बात करते हैं. तो वाटर वाले एरिया में वी आर लैगिंग बिहाइंड. clean cooking fuel में also we are off the targets. So heightened concern के जो SDG indicators हैं that is regarding women's well-being and gender inequality. तो यहाँ पे भी हम मतलब यहाँ पे they are हाई कंसर्न. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लैग कर रहे हैं, इतना ज्यादा हमें रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी में एंड वुमेन वेलबींग में. सो नो डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया इट हैज येट सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज बिफोर द लीगल एज ऑफ 18 ईयर्स. यहाँ पे हम स्टेट लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रहे हैं कि इंडिया में अभी तक कोई एक डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट जहां पे चाइल्ड मैरिज कंप्लीटली एलिमिनेट कर दी गई हो. सो करंट पेस की अगर हम बात करें, जिस तरीके से वी आर मूविंग फॉरवर्ड, जो हम इंडिकेटर्स की भी बात कर रहे हैं, मोर देन 3/4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं दे विल नॉट बी एबल टू रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ गर्ल चाइल्ड मैरिज टू दी जो हमारा एसडीजी टारगेट है ऑफ 0.5% बाय 2030. सो मोर देन 2/3 इंडिया में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो 230 तक ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे एज फार एज रिड्यूसिंग द चाइल्ड गर्ल चाइल्ड मैरिजेस. जो इंस्टेंसेस हैं उनको कम करने की हम बात करें तो सो वहाँ मतलब ऑब्वियसली देन इससे रिलेटेड कुछ इंडिकेटर्स भी, अगर हम गर्ल चाइल्ड मैरिज को कम करने की बात करते हैं, उससे टीनेज प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, पार्टनर वायलेंस की बात है. सो
that is obviously कुछ issues. So we need to be like all these areas, they need to be on our priorities. So despite overall expansion जो हमें देखने को मिल रहा है, मोबाइल फोन access in India में 93% of ऐसे households हैं अभी currently which are having access to mobile phones. Nearly like only 56% of the women हैं जो report करती हैं कि they own a mobile phone. Only 56%. So आज के टाइम में बहुत कम है. And so that is the progress. हमने यहाँ पे बात कर ली कि कहाँ पे इंडिया इज परफॉर्मिंग नाइसली, कहाँ पे चीजें दे आर ऑफ हाई कंसर्न फॉर अस. सो ये थोड़ा पिक्चर क्लियर रखना इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा कोविड-19 अप्रोच से हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमने उसका मेंशन कर दिया कि लार्ज स्केल लेवल पे हम कैसे शॉर्ट टाइम पीरियड में चीजों को स्केल कर सकते हैं. वो हमें डेफिनेटली हमारी कोविड-19 अप्रोच से सीखने को मिलता है. सो डेकेडल प्लान की बात करें तो अब वी नीड टू कम अप विद वन डेकेडल प्लान, क्योंकि 2030 तक वी नीड टू मीट दीज goals. So India needs to innovate a new policy path in order to meet the aspirations of its people in the decade ahead. So there is no historical precedence for a democratic and economically open nation on how to deliver development to 1 billion plus people in a manner that is healthy also, that is sustainable also. So आज तक ऐसा कोई precedence पहले नहीं देखने को मिला है कि कोई ऐसी country जहाँ पे population 1 billion से भी ज्यादा हो, they have achieved the goals in a healthy and sustainable manner. So uske liye we need to now come up with koi aisi innovative new policy so that we are at least very close to these goals. So in successfully delivering a real time response to COVID-19 pandemic jo humne dekhne ko mila, India has proved that it is possible to deliver at scale in such an ambitious and comprehensive manner. So as we say, nothing is impossible, though there can be challenges and difficulties, but things are not impossible. So to succeed in meeting the SDG targets, especially which are related to population health की बात करें, well-being of population, जो basic quality infrastructure है, gender equality, women welfare, एक similar concerted, pioneering and nationwide effort is the need of the hour. So that is all about the SDG targets and how India is performing as at this front. So again, here we are talking about social justice. So tread a new path, one that prioritizes social justice. So जैसे कि अभी हमने ऊपर SDG वाले आर्टिकल में भी बात करी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते रहते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस वो एट द सेम टाइम वो भी इम्पोर्टेंट है. सो हेयर May 1 it is widely known as the Labor Day. So 1st of May को हम every year we celebrate the Labor Day. So that's why here we are talking about social justice also. So it's a day जब हम celebrate करते हैं contribution of workers worldwide, and it's a moment for pride, celebration and hope. So 3 years हो चुके हैं कोविड-19 क्राइसिस को, फॉलोड बाय इन्फ्लेशन. जो उसके बाद हमें चैलेंजेस देखने को मिले वो बिल्कुल अलग थे. कोविड-19 एक अलग चैलेंज था हमारे लिए. तो उसके बाद वी सॉ द चैलेंजेस ऑफ इन्फ्लेशन, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखी, यूक्रेन वॉर, फूड एंड फ्यूल सप्लाई शॉक्स हमें देखने को मिले, बेसिकली सप्लाई साइड शॉक्स देखने को मिले. But the promise of renewal made during the pandemic of building back better have so far not been delivered for great majority of, अगर हम workers की बात करें वर्ल्ड वाइड, हम यहाँ ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो जो नारा दिया गया था building back better, so उस केस में वर्कर्स के लिए अभी कुछ इतना खास देखने को नहीं मिला है at that front. So reverse the hard reality and the mistrust. So globally जो real wages हैं they have fallen. Poverty definitely increase hui hai, inequality is also increasing, and enterprises, they have been hit hard because of COVID-19 and the supply side factors. So many could not cope with the cumulative effects of the recent unexpected events. So cumulatively जो एक साथ बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजों को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि एट द सेम टाइम उनकी रियल वेजेस भी कम हो रही थी, तो नेचुरली पॉवर्टी भी इंक्रीज हो गई. तो जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस थे, दे वर पर्टिकुलरली अफेक्टेड एंड मेनी दे हैव सीज्ड ऑपरेशंस आल्सो. तो ऑब्वियसली ऐसे चैलेंजेस थे जो लोग डील नहीं कर पाए, मैनेज नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पाए, उसकी वजह से बहुत ऐसी छोटे एंटरप्राइजेस हैं जो बंद होने की कगार पे आ गए एंड बंद भी हुए हैं. तो पीपल फील
कि जो sacrifices they made to get through COVID-19 they have not been recognized, let alone कि उनको reward दिया गया हो या कुछ compensation दी गई हो. So this combined with a perceived lack of opportunities has created a disturbing level of mistrust also. So it does not have to be like this. We are still the masters of our fate, but if we are to shape a new and a more stable and equitable world हमें चाहिए, तो we must choose a different path for that. So उस case में different path में हमारी priority होनी चाहिए social justice. So author of this article is Director General of the International Labour Organization. So he is saying that this is not only doable, but it is also essential for a sustainable and stable future. So how do we get there is the important thing. क्या steps लेना हमारे लिए important है to have a future like that and to be there in future. So for that, first and foremost is हमारे जो policies हैं and जो हमारे actions हैं, they must be human centered. And climate change की भी अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल चीज फिट बैठती है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो एक्शंस हैं, ह्यूमन सेंट्रिक होने चाहिए, जो अलाउ करता है लोगों को टू परस्यू बोथ मटेरियल वेलबींग की हम बात करते हैं, वी ऑल एस्पायर एंड वी ऑल वांट टू बी रिच, बट मटेरियल वेलबींग पे भी फोकस होना चाहिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी वो भी होना चाहिए, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल होना चाहिए. सो दिस इज ह्यूमन सेंट्रिक. सो हमारी पॉलिसीज, हमारी स्कीम्स, हमारे एक्शंस दे नीड टू बी ह्यूमन सेंट्रिक. सो इस अप्रोच से ऑब्वियसली ये अप्रोच कोई नई अप्रोच नहीं है या समथिंग यूनिक नहीं है जो पहले नहीं मतलब डिस्कस किया गया हो या पहले कभी मेंशन ही ना किया गया हो, but it was set out and agreed in the aftermath of the Second World War also. So उसके बाद भी इस चीज पे बात की गई थी जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनेशनल मेंबरशिप था, it signed the Declaration of Philadelphia in 1944. सो नेक्स्ट हमें फोकस करना है डिसेंट वर्क पे. दो विजनरी डॉक्यूमेंट है व्हिच सेट्स आउट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम्स हैं उनके लिए, सो दैट दे शुड नॉट बी टर्न्ड एक्सक्लूसिवली टू हिटिंग स्पेसिफिक ग्रोथ रेट्स और अदर स्टैटिस्टिकल टारगेट्स, बट हमें एड्रेस करना है ह्यूमन नीड्स क्या है, उनके एस्पिरेशंस क्या है, क्योंकि ये टारगेट तो सब कोई रखता है. जो स्टैटिस्टिकल नंबर्स की हम बात करें कि इतना टारगेट हमें अचीव करना है, बट उस चीज में, उस रेस में हमें जो ह्यूमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस है उसको मिस आउट नहीं करना है. तो उस चीज पे भी फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा इट मीन्स कि हमें फोकस करना है जो इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, पॉवर्टी इंक्रीज हुई है, जो कोर सोशल प्रोटेक्शन है, सोशल सिक्योरिटी है, उस चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है. सो मोस्ट इफेक्टिव वे इसका क्या है करने के लिए, तो दैट इज बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी जॉब्स सो दैट पीपल वो खुद को तो डेफिनेटली सपोर्ट कर सके, अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सके एंड दे आर एबल टू बिल्ड देयर ओन फ्यूचर्स. So decent work for all should be the target, and this is SDG 8 which terms it. So it means कि realistically addressing the long-term structural transformation of our time, ensuring कि new technology है, it creates and supports the employment, वो important है. Proactively जो हम challenges face कर रहे हैं climate change में, ensuring कि we are offering such jobs जहाँ पे skill training भी की जा रही है, transition support necessary है, जो workers काम कर रहे हैं, businesses काम कर रहे हैं. So ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एंड जो इवन कुछ ऑब्वियसली इंडिया में तो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, बट ग्लोबल लेवल पे हम यहाँ बात कर रहे हैं तो डेमोग्राफिक चैलेंजेस जो आ रहे हैं, सो that is another challenge, so that needs to be addressed, and ये सारी चीजें we need to take into consideration and move forward. So creating a global platform for this to make all this happen जो अभी हमने बात करी, we need to recommit to international cooperation and solidarity. तो इसके बिना we can't meet all these targets जो हमने बात करी अभी, and we must enhance जो हमारे efforts हैं, we need to create greater policy coherence होनी चाहिए between different sector, different areas, and segregation में चीजें काम करेंगी तो obviously good results नहीं मिलेंगे, जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में if you work in silos with different मतलब जो different areas अगर उनमें linkage नहीं होगा, dependence नहीं होगा, they are not working coherently, तो things would not be as we want them to be. So we must enhance our efforts, create greater policy coherence, particularly within multilateral systems. So
That's what even the Secretary General of United Nations also calls for it. So this is why we need global coalition for social justice. So this coalition ये create करेगी एक ऐसा platform जहाँ पे broad range of international bodies and stakeholders एक साथ आ सकेंगे. They would be able to work together with coordination and coherence, and it will position social justice as the keystone of global recovery, so that it is prioritized national level पे, regional level पे, global policies and actions होंगे. So in sum, we can say the bottom line is that it will ensure that our future is human centered. So we have the chance to reshape the world we live in. Economically बात करें, socially, environmentally. So we still have that chance, and let us take this opportunity and move forward to build equitable and resilient societies that can underpin lasting peace and social justice. So बहुत सारे keywords हैं जो हमने इस discussion में use किए. So you need to know them down at one place. And this was a little bit, different articles क्योंकि चीजें डेली बेसिस पे रिपीट हो रही हैं, तो दिस वाज समथिंग न्यू एंड रिफ्रेशिंग. सो दैट वाज अ गुड डिस्कशन एज फार एज दिस आर्टिकल इज कंसर्न्ड. And moving forward and finding out other important articles. So again, this is also talking about labor rights because it's 1st May today, so even this is talking about that. So कुछ challenges की बात करें तो extending hours of work है, ensuring job insecurity. We are setting the clock back in the name of ease of doing business. So ease of doing of business के नाम से under that garb we are extending the working hours. जो social insecurity है, job insecurity है, that is rising. Basically we can say कि जो informal jobs हैं that is increasing, जो contractual based jobs है that is increasing. So that is one thing that we are witnessing. So challenges by extending the hours of work. अभी recently हमने देखा था तमिलनाडु में there was this law जो propose किया गया था, but end में that was set aside, which was regarding कि आप 12 hours of work per day increase कर दोगे. Right now the cap is at 8 hours for one day, but उसमें बोला जा रहा था कि आपको फिर हफ्ते में 5 दिन काम करने की बजाय या 5 या 6 दिन काम करने की बजाय 4 दिन काम करना पड़ेगा. But again कुछ कंसर्न्स उसकी वजह से भी थे. सो दैट वाज नॉट अ डिजायरेबल मॉडल वी कैन से. सो कुछ ऐसी चीजें चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं, एंड these are some of the challenges that we are witnessing in the labor sector. So stray dogs and poor waste management. Poor waste management में हमने बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, पहला आर्टिकल की हमने बात करी लैंडफिल साइट से रिलेटेड. स्ट्रे डॉग्स का भाई एक अलग इशू चल रहा है. सो इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन इंक्रीजिंग अर्बन स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन एंड हाउ वेस्ट इज जनरेटेड, कलेक्टेड एंड मैनेज्ड. सो क्या इन दो चीजों के बीच में कोई लिंकेज, कोई कनेक्शन है या नहीं? विल look into that. And next is has there also been a rise in urban solid waste? So ये एक trend वाली बात हो गई, increase हुआ है नहीं. And what role can equitable housing and sanitation policies play? So ये बहुत important हो जाती हैं, equitable housing and sanitation policies. So how is India managing stray dog population? ये एक अलग question है. So अप्रैल में हमने देखा 65-year-old woman in Srinagar, she was attacked by street dogs outside her home. एक garbage collection point था, mound of food and poultry waste that becomes food for these free roaming dogs in the area. It was situated in front of her house. So एक ये linkage है जो अभी हमने बोला कि क्या poor waste management and stray dogs के बीच में कोई linkage है. तो जो ऐसी dumping sites होती हैं जहाँ पे कूड़ा कचरा मतलब इकट्ठा किया जाता है, तो जो stray dogs हैं they roam around there, वो उनकी ज्यादा पॉपुलेशन उसी एरिया में मिलती है बिकॉज देन ऑब्वियसली कुछ जो फूड होता है वो वहीं से खाते हैं. तो ये जो अटैक्स हैं बाय स्ट्रीट डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए हैं इस साल. सो फ्रीक्वेंट रिपोर्ट्स हमें देखने को मिली है डॉग्स अटैकिंग पीपल टू डेथ. दे हैव मेड द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट डॉग्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल इशू. तो एक ये एडमिनिस्ट्रेशन के नया चैलेंज है. उसके अलावा व्हाट डू द डॉग बाइट्स हैव टू डू विद द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट? सो अगेन इसके लिंकेज की बात करते हुए तो कैरिंग कैपेसिटी है, दैट इज अबिलिटी ऑफ अ सिटी टू सपोर्ट अ स्पीशीज. सो
that is basically in simple terms carrying capacity. So it is determined by the availability of food, कितना है, shelter की मतलब कितनी capacity है, तो उसके according हम carrying capacity किसी एक शहर की determine करते हैं. So free ranging dogs हैं. In the absence of these facilities, we are seeing scavengers that forage around for food है. Eventually they are gravitating towards exposed जो garbage dumping sites हैं, तो वहाँ पे जो stray dog population है that is increasing. So dogs they congregate around those areas, those urban dumps like landfill sites due to feeding opportunities there. So जो population boom Indian cities में देखने को मिला है, it has contributed to a staggering rise in the solid waste. Definitely urban जो solid waste हुआ है increase, that is because population is also increasing, urbanization इतना increase हुआ है. So Indian cities they are generating more than 1,50,000 metric tons of urban solid waste every single day. So that's the capacity of waste generation also अगर हम बात करें. So according to United Nations Environment Program UNEP 2021 report, it has estimated 931 million tons of food available to consumers ended up in households, restaurants, vendors and other food service retailers bins in 2019. So Indian homes on average उन्होंने generate किया है 50 kg of food waste per person. Per person 50 kg of food waste, you can imagine. And this waste often it serves as a source of food for these hunger-stricken, free-roaming dogs that move towards densely populated areas in the cities. क्योंकि वहाँ पे जो wastage है वो भी ज़्यादा है, तो urban slums हैं which are usually located next to the garbage dumping sites and the landfills. So dog population भी वहाँ पे हमें increase होती हुई दिखाई दी है. So urban dogs they are believed to have a distinct set of traits as compared to rural. So इसमें भी कुछ distinction है urban dogs and rural dogs की भी अगर हम बात करें तो distinct set of traits हमें देखने को मिले हैं. तो we can say कि as they have learned to develop survival techniques in this fast-paced, often hostile, motorized urban environments. 2014 की एक स्टडी है जो ये चीज बोल रही है. So it also says कि dogs do not usually pose a threat to human well-being and proper management of refuse and a tolerant, if not friendly attitude towards the dogs can ensure their peaceful coexistence with us. So urbanization क्या role play करती है? So cities they have witnessed sharp increase in the stray dog population, which as per the official 2019 जो livestock census था, the number of the stray dog population stood at 1.5 crore. So 1.5 crore dogs हैं इंडिया में. And however, 1.5 करोड़ जो मैं नंबर बोल रही हूँ ये स्ट्रे डॉग्स का है, खाली डोमेस्टिकेटेड डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं. सो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स दे पेग द नंबर टू बी अराउंड 6.2 करोड़. सो जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स है वो बोल रहे हैं कि 6.2 करोड़ द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया, बट 2019 लाइवस्टॉक सेंसस की बात करें तो नंबर इज 1.5 करोड़. सो जो नंबर ऑफ डॉग बाइट्स है दे ऑब्वियसली डबल हुई होंगी जब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है. तो इंडिया ऑल्सो शोल्डर्स द हाईएस्ट रेबीज बर्डन इन द वर्ल्ड. इसकी वजह से जो रेबीज हैं ऑब्वियसली डॉग बाइट्स के इंसिडेंट्स अगर डबल हुए हैं तो जो रेबीज इज अ डिजीज व्हिच इज कॉज्ड बाय डॉग बाइट्स, तो उसकी वजह से जो डिजीज बर्डन है that is also increased on India, accounting for a third of the global deaths which are caused due to rabies. So जो इंद्रधनुष स्कीम है उसमें आपको पता होना चाहिए whether like rabies is a part or not. So study which was conducted उसकी बात की जा रही है, उसमें हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. एंड इसके अलावा So how has India managed this problem is the important question. इसको manage कैसे करेंगे वो ज़्यादा important है. So India का response की अगर हम बात करें to this stray dog menace, it has relied upon animal birth control program. So we have this ABC program which is animal birth control program through which जो municipal bodies हैं they trap, they sterilize and then they release these dogs to slow down their population. So this is the normal thing that we have followed in India. So, and second is anchor. The second anchor was rabies control measures, कुछ हैं जो government लेके आई थी. That was including vaccination drives also. So एक था population control के लिए sterilization, जिसमें municipal bodies have played important role. Second is like
focusing upon controlling rabies through vaccination. But implementation की बात करें तो that is very low. अवेयरनेस बहुत कम है अराउंड हेल्थ इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं डॉग बाइट्स के, तो लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं है. इरेगुलर सप्लाई ऑफ वैक्सीन एक अनदर चैलेंज है. डिले इन सीकिंग ट्रीटमेंट्स, वी आर सीइंग लैक ऑफ नेशनल पॉलिसी, दैट्स व्हाट इज लाइक लैकिंग. एंड इतना ज्यादा कोई इम्पैक्टफुल हमें चेंज देखने को नहीं मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू कंट्रोलिंग एंड डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड. सो आज के टाइम में ये एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल प्रॉब्लम हो चुकी है इंडिया के लिए. So protests against the refinery project in Maharashtra. So what is this Ratnagiri refinery and petrochemicals project? A project hai kya, and it is going to harm the coastal Konkan region or not? So protests are going on against this refinery project in Maharashtra. So 25th April ko Maharashtra government, it has started conducting soil testing at the Rajpur Tehsil's Barsu village in the coastal Ratnagiri district to know if the site was suitable for the proposed multi-billion-dollar Ratnagiri Refinery and Petrochemicals Limited project. And this is being said कि ये world का सबसे बड़ा single location refinery complex होने वाला है. So 2022 में अगर इंडिया की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी की बात करें तो इट स्टूड एट 251.2 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम. सो वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनर इन एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें. सो ये रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, इसमें बेसिकली इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव कैपेसिटी ऑफ 60 मिलियन टन्स पर एनम एंड एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन सऊदी अरामको एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन. सो इनके बीच में एक जॉइंट वेंचर है. एंड इसको पहले भी ये प्रोजेक्ट 2014 में इस पर डिस्कशंस चल रही थी एंड इट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड ₹3 lakh crores. So besides fuel project, it is also proposes to develop various downstream petrochemicals to meet India's fast growing petrochemicals demand. So even downstream industries हैं उस पे भी focus किया जा रहा है. Initially project था, it was supposed to come up at Nannar, about 20 kilometers from Barsu. However, due to strong opposition from locals वहाँ पे भी environmental activists ने भी oppose किया शिवसेना, this project इसको denotify कर दिया गया 2019 में. तो विलेजर्स का रिएक्शन की बात करें तो हंड्रेड्स ऑफ रेजिडेंट्स हैं जो इन गांव से सराउंडिंग एरियाज में नेबरिंग विलेजेस, दे आर प्रोटेस्टिंग कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, दे आर कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड जो लाइवलीहुड्स होगा ऑफ द लोकल कम्युनिटीज जो उस एरिया में रहते हैं. तो एनवायरनमेंट एंड लाइवलीहुड के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो मेजर कंसर्न्स हैं लोगों के, इनहैबिटेंट्स के, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्रोजेक्ट. सो जो ये प्रोजेक्ट का प्रपोज्ड साइट भी है ना, वो भी एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में है जहाँ पे सेवरल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना है विच आर एंडेमिक टू दैट पर्टिकुलर एरिया, वो इंडिया में और कहीं नहीं मिलती हैं. तो ये एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया भी है. एंड कोकन रीजन, इट हैज लार्ज मैंगो ऑर्चर्ड्स एज वेल एज जैक फ्रूट एंड कैश्यू प्लांटेशंस. जो विलेजर्स हैं, दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न अबाउट पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट की वजह से हो सकते हैं इन फ्यूचर, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स आल्सो. सो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसकी वजह से हेल्थ हैजार्ड्स भी होंगे. एंड जो वहाँ पे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है, एग्रीकल्चर की बात करें कोंकण रीजन को, सो जो कोस्टल एरिया ऑफ महाराष्ट्र उसको हम कोंकण बोलते हैं, एंड जो वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना एंडेमिक है, सिर्फ उस एरिया में मिलते हैं, इंडिया में कहीं और नहीं मिलते, वर्ल्ड में नहीं मिलते हैं, उनको भी थ्रेट होगा. So according to the locals, they say कि जो Konkan है, it suffers from air pollution due to presence of coal-fired power plants. So already air pollution problem तो है ही वहाँ, क्योंकि जो coal plants है वो वहाँ पे work करते हैं, उसकी वजह से air pollution is the problem. So many farmers हैं, they have expressed their concerns कि that they would lose their source of livelihood अगर land उनका acquire किया जाता है for this project. So locals का कहना ये है कि इस project को shift करना चाहिए कुछ ऐसे arid zone में जहाँ पे like मराठावाड़ में या विदर्भ में आप इसको shift कर सकते हो. जो एक arid zone है वहाँ पे ecologically भी इतना sensitive नहीं होगा, जो biodiversity है, flora and fauna, wildlife है, उसको impact नहीं होगा.
एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तो वो अगर आप करंट जो प्रपोज साइट्स है वहां पे सेटअप करोगे प्रोजेक्ट को तो प्रॉब्लम और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, लोगों की लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट नहीं होगा। सो ये कुछ लोकल कंसर्न्स हैं जो लोगों की सही भी हैं एंड दे नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट प्रपोज किया जाता है। तो लोग बोल रहे हैं कि आप इसको मराठावाड़ा एरिया या विदर्भ एरिया में शिफ्ट कर दो जो एक एरिड जोन है एंड ये सारे कंसर्न्स वहां देखने को नहीं मिलेंगे, तो यू कैन शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर एरिया। बट देन ये भी आ जाता है कि उस प्रोजेक्ट का ज्यादा रिजल्ट आपको कौन से एरिया में मिलेगा। सो दैट्स देयर। एंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? सो नवंबर लास्ट ईयर में शिंदे फडणवीस गवर्नमेंट थी, दे स्टार्टेड इशूइंग लैंड एक्विजिशन नोटिस भी इशू कर दिए गए थे to residents of 6 villages, and it has been strong supporter of this project, argued कि it would reduce India's dependence on crude oil imports। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उससे जो आपको बेनिफिट्स होंगे उसमें से फ्यू ऑफ देम आर कि जो हमारा इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स पे इतना 87% रिकॉर्ड हाई लेवल ऑफ डिपेंडेंस है वो हमारा कम हो जाएगा विद दिस प्रोजेक्ट। and it would be providing a boost to the economy also, a job मतलब generating employment opportunities, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं प्रोजेक्ट के, बट अगेन जो कंसर्न्स है चैलेंजेस हैं आप उनको ओवरलुक करके यू कांट गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। तो जो गवर्नमेंट है उसका स्टैंड तो ये कि इट इज सपोर्टिंग दिस प्रोजेक्ट एंड बट जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र की उनका कहना ये भी है कि प्रोजेक्ट को जो लोकल लोगों की कंसेंट के बिना इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि पीपल्स की गवर्नमेंट है, वी विल नॉट प्रोसीड विदाउट द लोकल पीपल्स कंसेंट। So this would be helping India in making India self-sufficient in petrochemical sector, reducing country's dependence on imports, further boosting the local economy also. And then Saudi Aramco, जो joint venture में partner countries हैं and companies हैं, now they are also expressing concern कि project को इतना delay किया जा रहा है, तो जो इनका interest है in this project that is also reducing and falling, so that is become a cause of concern for both the central and the state government. So ये challenges हैं, ये कुछ local concerns जो हमने बात करी regarding this project. So इससे regarding जो law है ना आप उसके बारे में find out करोगे, that is also important. So Operation Kaveri, it's going on successfully. Everyday basis पे we are seeing कि Indians they are reaching back to India. So IRDA जो है Insurance Regulatory and Development Authority of India, regulator in the insurance sector. So it has asked जो insurance firms हैं they need to lay down social media rules. So social media rules lay down करना important है, जो guidelines रहेंगी for the employees so that to ensure कि कोई unverified या confidential information related to organization is disseminated to the public through these platforms। वो मतलब basically कोई unverified या confidential information ना share की जाए on the social media platforms related to the company and even the people or the employees, वो share ना की जाए। तो from that perspective the regulator has asked the firms कि आप social media guidelines या rules issue करो, that is going to be important। इसके अलावा सोशल मीडिया शुड बी यूज्ड इन अ वे दैट एड्स वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल मीडिया की वजह से जो वैल्यू है जो रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म वो हैम्पर हो या उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। So information and security, cyber security जो guidelines है, they were issued by IRDAI to all the insurers also. They have a specific section regarding acceptable usage of social media. So जो ये बोलता है कि employees they should be refrained from disseminating कोई unverified या confidential information on social media platforms. And also जो media platforms हैं आप उनको like complaint रिपोर्ट करने के लिए यूज ना करे तो इट वुड बी बेटर। सो बजरंग पूनिया इज सेइंग कि अगर हमें यहाँ जस्टिस मिल जाती है तो वो विनिंग द एशियाड मेडल से हमारे लिए कहीं ज्यादा बड़ी होगी। सो रेसलर्स दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम क्योंकि एशियाड गेम ट्रायल्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं, बट दे आर इंसिस्टिंग कि जो उनकी फाइट है
वो इससे भी या एक मेडल जीतने से भी ज्यादा बड़ी है. सो दे आर गेटिंग द सपोर्ट फ्रॉम संयुक्त किसान मोर्चा ऑल्सो, and they are calling for the arrest of this person who is the president of the Wrestling Federation of India. तो उनकी डिमांड यही है. एफआईआर एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तब एफआईआर रजिस्टर की गई है, उसके अलावा जो डिटेल्स एफआईआर में भी वो उनके साथ शेयर नहीं की गई हैं, एंड the person still continues to be the president of Wrestling Federation of India. So they are demanding कि he should be arrested. Coming to the world page, so here we are seeing ईरान के जो एमपी है, ही रिमूव्स द इंडस्ट्री मिनिस्टर बिकॉज प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं एंड इकोनॉमी क्रंच देखने को मिल रहा है. सो ईरान में भी इकोनॉमिक चैलेंजेस डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं. ईरान पे सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं. उसके अलावा जो न्यूक्लियर एरिया में जो डेवलपमेंट करने की सोच है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी वजह से सैंक्शंस इम्पोज किए गए हैं ईरान के ऊपर, एंड इकोनॉमिकली चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं. तो दैट्स देयर. सो नाउ लेट्स टेक अप द मिंट न्यूज़पेपर. सो इंडिया की जो मिल्क इकोनॉमी है उसके बारे में बात करेंगे. यहाँ पे अगर हम बात करें मिल्क डेफिसिट नेशन इन इट्स अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया की पोजीशन वाज मिल्क डेफिसिट नेशन. जब हम बात करें कि जब इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, नाउ वी हैव इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड. सो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ये पूरी जर्नी रही है इंडिया की. सो कंट्रीज पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन इट एक्सीड्स ग्लोबल एवरेज, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन इट हैज क्लॉक्ड 61% ग्रोथ इन 8 years ending 2021-22. सो लास्ट 8 years में ग्रोथ 61% रही है. डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, and dairy it has become the single largest agricultural commodity which is contributing 5% to the economy's output. सो हम जो चैलेंजेस की बात करें तो वी आर सीइंग कि जो मिल्क के प्राइसेस हैं दे आर इंक्रीजिंग. प्रोडक्शन इट वाज रिपोर्टेडली स्टैग्नेंट 2022-23 में. तो एक ये रीजन है कि मिल्क प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं. फॉडर प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं बिकॉज वी सॉ कि लंपी स्किन डिजीज, तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन या आउटपुट रहा मिल्क का वो कम हुआ. एंड गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ ये बोला कि वी विल नॉट इम्पोर्ट द मिल्क. तो ऐसी कोई जरूरत, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमें मिल्क को इम्पोर्ट करना पड़े इंडिया में. सो इंडिया वर्ल्ड में अगर हम प्रपोर्शन की बात करें तो 24% ऑफ जो मिल्क है वो इंडिया से आ रहा है. सो दैट इज वी कैन से प्रपोर्शन एज फार एज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड. एंड इंडिया में स्पेसिफिकली बात करें तो कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन देखने को मिलता है. तो यहाँ पे हमें डेटा दे रखा है रिगार्डिंग पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क 2021-22 के लिए, विच इज ग्राम्स पर डे. तो राजस्थान में इट इज लाइक हाईएस्ट इज इन पंजाब 1271, हरियाणा में इट इज 1081, राजस्थान में 1150, आंध्र प्रदेश में 800. सो बेसिकली जो नॉर्थन स्टेट्स है, नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, वहां पे ज्यादा प्रोपोर्शन है. सो पंजाब में जो हाईएस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी है वो है 1.3 kg पर डे. नेक्स्ट राजस्थान है. सो 6 नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं विच डोमिनेट दिस टॉप 10 लिस्ट जहां हम पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी की बात करते हैं. तो सो यहाँ एक्सपोर्ट्स की फिगर्स भी दे रखी हैं फ्रॉम 2013-14 से 2022-23. सो इम्पोर्ट भी हम कर रहे हैं, ये नहीं कि हम बिल्कुल भी इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं. सो
एक्सपोर्ट्स का अगर हम ट्रेंड समझे तो कोई ऐसा एक यूनिफॉर्म या कॉन्टिन्यूस ट्रेंड नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट आल्सो। सो हाईएस्ट 2013-14 में था, उसके बाद कम होता हुआ फिर स्टार्ट हो गया इंक्रीज होना 2017-18 के टाइम में। फिर कोविड-19 आ गया तो फिर एक फॉल आया और उसके बाद से इट इज बीन इंक्रीजिंग। बट 2021-22 और 2022-23 की फिगर्स कंपेयर करें तो उसमें हमें शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है। So the growth in the segment, it has been aided by value added products. Apart from being the largest producer of milk, country has also been a net exporter of dairy products. So we are a net exporter. Exports, they have jumped by a whooping 97% the fiscal year 21-22. So 97% say exports have jumped, and import needs mostly for specific items, they are minimal, which is why center had to quickly refute कि जो पॉसिबिलिटी कि वी वुड बी इंक्रीजिंग आवर इम्पोर्ट्स इन द डेयरी सेक्टर, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है विच इज गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट। Fodder prices, they are also on a high. So cow economy, it is facing a supply crisis with high fodder prices, shortage of cattle due to lumpy skin disease. So the fodder prices hai, they have run through roof, causing significant impact on milk production. So wholesale fodder inflation की बात करें तो it has hit a record high of 30% November के महीने में last year, while 3 million cattle they have got infected because of this lumpy skin disease so far. 3 million means 30 lakh cattle, and resulting the cattle shortage, it had a ripple effect on the milk prices. So ये कुछ factors हैं, and fodder prices और WPI का यहाँ पे trend दे रखे हैं in the form of graph. So fodder prices you can see कितने sharply they have increased. Now that we are seeing कि थोड़ा decline देखने को मिल रहा है, but still prices अभी higher level पे चल रहे हैं. So even milk prices, you can see they have been increasing. Double tone milk की बात करो, full cream milk, toned milk, that's increasing. So that's there. And यहाँ पे दे रखा है number of cattle जो they were basically affected because of this lumpy skin disease. So highest राजस्थान में रिकॉर्ड किए गए, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, then पंजाब. So highest infections हमें राजस्थान में रिकॉर्ड किए. So 76,000 they have died. Rajasthan में 15,67,000 were infected. 76,000 they have died because of this disease. So close to like 6% अगर हम बात करें, close to this share of the affected cattle they have died due to this viral infection in 2023. तो 6% जो 2023 में infections record किए गए, 6% cattle they have died. Then so center it will step in अगर traders they are hoarding pulses and जिसकी वजह से price rise भी हो रहे हैं, hoarding activity. So government would step in अगर ऐसे instances events देखने को मिलेंगे. So prices of wholesale tur they have declined. So tur it's a form of a pulse, type of pulse. They have declined nearly 3% after government formed a panel to monitor these stocks. So तुर दाल जो है एक खारिफ क्रॉप है, एंड it has been in short supply following crop damage because of unseasonal rain last October. तो उसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हुआ है, and prices increase, and official could also be speaking with an eye on next year's tur crop which could suffer because of El Nino predictions. So tur dal की बात करें, it makes up 13% of domestic pulse basket. सो गवर्नमेंट के पास क्या पावर है अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर सकती है इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेस, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो जो एक्ट है यू कैन फाइंड आउट अबाउट दैट, उसका मेंशन यहाँ आर्टिकल में कहीं नहीं कर रखा है, एंड जो गवर्नमेंट के पास पावर है यू कैन ऑल्सो लाइक रीड दैट डाउन. So rupee for Russia and mir for India, they are on the cards. So India and Russia will explore the possibility of using rupee and mir cards in each other's country for hassle-free payments amid sanctions which are imposed by West on Moscow. So इससे regarding बातचीत चल रही है, and recent high-level internal governmental commission meeting हुई on trade, economic, scientific, technological and cultural cooperation. So the two sides, they have agreed to explore allowing acceptance of these cards
people privy to the matter said. So this is one update. And जो UPI हम basically बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कैरी आउट कर सकते हो, एंड उसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इट इज उसका रोल इम्पोर्टेंट है, फास्टर पेमेंट सिस्टम ऑफ बैंक ऑफ रशिया, सो इट्स देयर. नाउ विल कम टू फाइनेंशियल एक्सप्रेस. सो यहाँ पे so Jio and Airtel, they may face TRAI red flag on unlimited 5G. So TRAI is the Telecom Regulatory Authority of India, regulator of the telecom sector. So Vodafone Idea had accused two of predatory pricing. So सबसे पहले हमारे लिए मीनिंग पता होना चाहिए predatory pricing का मीनिंग क्या होता है. So Vodafone Idea ने दोनों Jio और Airtel को accuse किया है कि they are indulging into predatory pricing as far as providing 5G services is concerned. So that is the one acquisition. And इसके अलावा तो प्रेडेटरी प्राइसिंग बेसिकली यही होता है कि पहले आप बहुत लो प्राइस चार्ज करोगे, जैसे इनिशियली जियो ने किया था जब बिल्कुल इंट्रोड्यूस किया गया था जियो को इन प्रोवाइडिंग सिम कार्ड्स. तो आप पहले बहुत लो प्राइस, बहुत ही मिनिमम प्राइस रखोगे, बेसिकली उसमें आपको लॉस ही होगा कंपनी को. बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपके पास इतना लार्ज कंज्यूमर बेस हो जाएगा, then you will start charging higher amount, and this is what basically is called predatory pricing. So 5G services के केस में यही देखा जा रहा है. Basically Vodafone ने accuse किया है Airtel and Jio को, they are indulging into such activities. And 5G से related जो important facts हैं वो obviously important है ही हैं, but इतना general चीजें आती नहीं है, but आपको पता होना that would be important. And तो a quarter of jobs जो हैं वो change हो जाएंगी by 2027. So ESG digital to drive India's jobs growth. So ESG का full form होता है environmental, social and governance से related ये factors they are like gaining much more importance. जहाँ तक कि businesses की बात करें, कोई भी चीज की बात करें तो having appropriate focus on these three areas is very important. And जो digital basically sector है, gig economy, हमने देखा कि उसका size भी increase होने वाला है and that is increasing with time. So that is basically कि जो नेचर ऑफ जॉब्स है इंडिया में वो चेंज हो जाएंगे बाय 2027. एंड की ड्राइवर्स की बात करें तो ग्रीन ट्रांजिशन, सप्लाई चेन्स लोकलाइजेशन, इट विल लीड द जॉब ग्रोथ, and technology adoption and digital access to have the net positive effect in job gain. India में 22% job churn compared to 23% global average. 60% of the firms they think कि wider use of ESG वो drive करेगा आने वाले time में job growth. So जो टॉप रोल्स रहने वाले हैं आने वाले टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट एंड साइंटिस्ट, सो इनकी इंपॉर्टेंस आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली आपकी स्किल्स भी डेवलप्ड होनी चाहिए. सो 44% ऑफ ऐसे इंडिविजुअल वर्कर्स स्किल्स हैं विच विल नीड टू बी अपडेटेड. हाईएस्ट प्रायोरिटी वुड बी ऑन एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन द कमिंग टाइम्स. सो दिस इज बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 का डेटा हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, so that we have a fair idea about it. And focus on the vaccine market. So Jitendra Singh, who is the Minister of State for Science and Tech, said कि Indian vaccine market, it has carved out a place for itself global level पे definitely, and it is expected to reach a valuation of rupees 252 billion by 2025. So टैक्स इवेजन की हमने पहले भी बात करी है कि टैक्स टेररिज्म पे गवर्नमेंट इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी स्ट्रिक्ट. सो टैक्स इवेजन प्रोब अगेंस्ट इंश्योरर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इट हैज बीन वाइडेंड. सो बहुत ज्यादा और ज्यादा नोटिस सेंड किए जा रहे हैं. जो लार्ज स्केल मिसयूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है दैट इज सस्पेक्टेड. सो दैट्स हाउ दिस इज one loophole. And
Insurers and mutual funds, they are facing GST and income tax department probe for the alleged tax evasion. अंडरग्राउंड कोल माइनिंग की बात करें तो स्लू ऑफ सोप्स हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट अवेलेबल कर रही है सो एज टू पुश मोर व्हेन इट कम्स टू अंडरग्राउंड कोल माइनिंग सो फोकस ऑन द अबैंडन्ड माइंस पे गवर्नमेंट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स दैट एंड परसेंटेज शेयर ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइंस की बात करें यहाँ डिफरेंट कंट्रीज का शेयर दे रखा है तो इंडिया का इट इज लेस देन 5%, हाईएस्ट चाइना में, यूएसए में 33%, ऑस्ट्रेलिया में 20%. So open market sale, it is going to be allowed and revenue sharing is proposed. So ministry has set a coal production target of 1 billion ton by in financial year 2024 and 1.31 billion ton in the next financial year. हाईवे प्रोजेक्ट्स 402 ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहां पे डीले देखने को मिल रहा है तो इसकी वजह से कॉस्ट ओवररन एक कॉज ऑफ कंसर्न रहता है जिसकी हम बात करते हैं. So infrastructure and project monitoring division, it is mandated to monitor central sector infrastructure projects, which is costing rupees 150 crores and above. And it is like based on information provided on the online computerized monitoring system by project implementing agencies. सो अगेन ये जॉब सेक्टर की बात की जा रही है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम इंडिया में देखें तो यू कैन सी Q1 की हर ईयर में दे रखा है डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का. तो 2018 से 2022 Q1 की फिगर्स हमारे पास हैं. तो 2020 में ऑब्वियसली कोविड-19 की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्पाइक हमें देखने को मिला Q1 में, उसके बाद डिस फॉलिंग. 2021 के पहले क्वार्टर में फिर से स्पाइक हुआ थोड़ा सा बट इट वाज कंपैरेटिवली लेस देन जो 2020 में देखने को मिला. देन वी आर लाइक सीइंग कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है. यूएसए में देखें तो 2020 अगेन Q1 में बहुत मेजर स्पाइक हुआ अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, उसके बाद इट इज ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहा है. ब्राजील में अगर हम कंपेयर करें इंडिया और यूएसए से तो ब्राजील में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंपैरेटिवली हायर है बट ग्रेजुअली वो भी कम हो रहा है. बट लेवल जो है बाकी दो इकोनॉमीज इंडिया और यूएसए हायर चल रहा है. So combating misinformation, WHODG is saying that civil society organizations, they can help combat misinformation if we work with WHO to ensure that evidence it is packaged and disseminated in a way that it is well understood and useful for the communities also. तो यहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात की जा रही है तो यहाँ पे ऑब्वियसली मिलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए. And obvious answer is to include more nutritious and climate resilient crops. अगर हम climate smart agriculture की बात कर रहे हैं like millets, pulses in the PDS while scaling down rice procurement. So आने वाले टाइम में कुछ changes किए जाने चाहिए. So government must upgrade at least 10% of 5 lakh odd fair price shops as nutritious food hubs. So they need to be turned in such a way that they are nutritious food hubs and these can stock like have fortified rice. अगर हम nutritious food की बात कर रहे हैं तो fortified rice, wheat, millets, pulses, fortified milk, edible oils and eggs, they can be made available through these PDS shops. So greenflation क्या है is a price worth paying. So green premiums, it will raise the prices short term में, but they are worth paying for now. So how much extra would you pay for a production that's less harmful for the planet? This is greenflation या green premiums कि आप कितना extra pay करने के लिए तैयार हो. How much are you willing to pay for a product जो planet के लिए, जो environment के लिए less harmful hai. So it's a vital question for business leaders and investors to contemplate on this because companies, they will have to spend trillions of dollars over the next couple of decades to eradicate the carbon emissions. So this is what greenflation term has the context and the meaning.
Lastly, we'll take up Indian Express. So here we'll have a look at the important things. लुधियाना में जो इंसिडेंट हुआ उसकी हम बात कर चुके हैं. I think we'll just directly jump on to the editorials and then the explain section if we have it for today or not. So editorial page pe Worldly Wise is saying ki learning is not attained by chance. It must be sought for with ardor and diligence. So ad hoc epidemic DU के जो lecturers DU में अभी lecturer suicide हुआ, it should occasion introspection on the faculty recruitment. So government must regularize the post and also fill the vacancy. So जो guest teachers हैं, obviously insecurity बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. So ad hoc epidemic, that's what we are saying. So जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, it envisions cutting edge pedagogy, talks of multidisciplinary instruction. It lays emphasis on developing critical faculties of the students. So it recognizes जो टीचर का रोल है in bringing about these far-reaching reforms. So टीचर का रोल definitely important रहेगा, but epidemic जो हमें ad hocism colleges, universities में देखने को मिल रही है, it devalues the role of the teacher and stands in the way of attaining the policy's lofty goals. So policy बोल रही है कि teachers का role important रहेगा, but at the same time जो ग्राउंड लेवल पे हमें रियल सिचुएशन देखने को मिल रही है वहां पे एड हॉकिज्म इंक्रीज हो रहा है, जो टीचर्स से रिलेटेड कंसर्न्स हैं दैट इज इंक्रीजिंग, मतलब बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है. सो कार्डर ऑफ overburdened instructors हैं under constant stress over tenurial security will find it difficult to contribute meaningfully towards the development of the knowledge economy envisaged by NEP and institutions. They cannot be built on the back of unfair employment conditions. So DO teachers suicide should be warning enough for this situation. So gaps in growth की बात करें तो across sectors data is pointing to continuing divergence in the consumption pattern. So policymakers, they must heed to this thing. So in a few weeks from now, जो National Statistical Office है, it will release its estimates of economic growth for the fourth quarter, that is January to March 2022-23 वाला previous financial year के लिए we are going to have the data regarding that. So its provisional estimates for the full year वो भी हमारे लिए available हो जाएंगे. So while this will shed greater clarity कि कैसे household consumption it has been performing during this period of uncertainty, जो data है on key consumption segments released so far, it is pointing towards mixed trends in the private consumption. So कोई definite या single trend नहीं देखने को मिल रहा है, चीजें they are mixed and across a range of sectors like housing की बात करें, automobiles, two-wheelers, mobile phones, incoming data point towards continuing divergence. So in area में हमें continued divergence pattern देखने को मिल रहे हैं when we are talking about consumption patterns, and robust sales हमें देखने को मिल रही है top end of markets alongside subdued sales at the lower end of the spectrum. So like अगर हम take for instance we talk about the automobile sector, so Maruti Suzuki, it accounts for a significant share of the cars which are sold in the country. So fourth quarter में sales of its cars in the mini और जो compact segment था actually वो कम हो रहा है, and in comparison जो high utility vehicles हैं वो वहाँ पे हमें growth या sales ज़्यादा देखने को मिल रही है. तो जो सस्ती चीजें हैं low end पे हैं वहाँ पे slow down हो रहे हैं, and जो high end पे हैं वहाँ पे growth increase होती दिखाई दे रही है. तो basically this is pointing towards the fact कि इंडिया में जो इनकम इनइक्वालिटी है या जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है दैट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि जो एक्सपेंसिव चीजें हैं वहां पे ज्यादा डिमांड मिल रही है, जो सस्ती हैं जो अफोर्डेबल हैं वहां पे स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. सो डेफिनेटली दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द फैक्ट कि इनकम इनइक्वालिटी इज इंक्रीजिंग एंड उसकी वजह से ये इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है. सो एक ये छोटा सा पॉइंट हो गया कि हमें पता होना चाहिए कि हाउ इज द ट्रेंड एज फार एज द कंजम्पशन पैटर्न्स इज कंसर्न्ड. सो 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रोन बाय अराउंड 7%. दैट इज एक्सपेक्टेशन, बट वंस वी हैव द फिगर्स सो we'll have the exact thing and the exact idea about it. So in April, Monetary Policy Committee RBI ने pegged किया economy to grow at 6.5%.
In this financial year, however, जो uneven nature है of this growth, that must be taken into consideration by policy makers, जहाँ तक कि policy formulation की बात कर रहे हैं अगर हम आने वाले टाइम में. तो यूक्रेन कह रहा है कि it says कि it remains in control over key supply passage into city in east. So Wagner boss threatens withdrawal, repelled 58 Russian attacks over the past 24 hours from the Bakhmut to Donetsk, says Kyiv military. So Russia was harsh response over Poland's school shooter. So ये भी हमने कल देखा था. And G7 should adopt risk-based artificial intelligence regulation, says the digital ministry. So keyword, I would like to repeat this again, risk-based artificial intelligence regulation. So amid the concerns, Japan, this year's chair, so Japan is chairing G7 meet. It has taken an accommodative approach on the artificial intelligence developers, pledging support for the public and industrial adoption of artificial intelligence. So Italy, which is a member of G7 group, and it took ChatGPT offline last month to investigate its potential breach of personal data rules. So Italy ने basically ChatGPT है, so that is taken offline. आप उसको use नहीं कर सकते. So they are investigating जो personal data breach है, if it is like violating that. So while it has lifted the ban on Friday, so अभी recently ban को हटा दिया गया, and the move has inspired fellow European privacy regulators to launch investigations. So बाकी countries में भी similar concerns हो गए कि जो personal data privacy breach है, that might be possible because of artificial intelligence and ChatGPT. So कुछ concerns हैं, and we get this keyword from here. So यहाँ पे PM's मन की बात के ऊपर आर्टिकल है. So completion of 100 episodes landmark for the PM's flagship monthly radio address. Why did he choose the old world medium of radio, and what is spoken about, and what chords does it strike? So हमारे लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन पे प्राइम मिनिस्टर ने बात करी है. एंड So यहाँ पे it is mentioned yoga की बात की है ज़्यादा, women led initiatives, youth and cleanliness, they have been among the most touched upon topics on Man Ki Baat since it began in October 2014. So he frequently spoke about the valor and sacrifice of the Indian soldiers, the nation's cultural heritage, and recounted the stories of the life and the work of Padma awardees and other achievers. And he has also spoken on the issues of science and environment. So he has also dwelt on Khadi at length, transcripts of episodes that shows. And he had casually asked the people to wear Khadi also during the first episode. So जो 100 episode था उसमें he recalled some of the important issues that he has spoken on and how some of them became wider movements. So like for instance Sunil Jaglan tha who started the selfie with daughter campaign in Haryana, जहाँ पे obviously जो sex ratio that is very skewed, so that joined the PM on the show over a call, and soon it became a movement in the state. So selfie with daughter, it had turned into a global campaign, and the result of such efforts can be seen in improvement of the gender ratio in Haryana. And कुछ ऐसे campaigns जो basically they were related to cleanliness, environmental and ecology, encouraging people to buy the local products and visit the Indian tourist spots. So वहाँ पे भी हमें development देखने को मिली. So here is this article by Vinesh Fogart. So World Championship medalist wrestler हैं, and she is saying कि जब women अपनी आवाज उठाती हैं तो they are targeted first. So in this idea exchange, Vinesh Fogart, she's a wrestler. She's speaking on gathering courage to protest against the president of WFI for alleged sexual harassment, the female wrestlers, and the lack of support from the sports fraternity. So the session moderated by, you can see the name. So
She's saying कि we didn't have the courage at the time to file an FIR क्योंकि we were wondering what would happen. The families, they're also scared, wondering what their children are talking about openly. So entire country worships cricket, but not a single cricketer has spoken up. And we aren't saying you speak in our favor, but at least put out a neutral message and say there should be justice for whichever party they are favoring. So regarding that, she's like spoken about in this article. So price revision as per this new gas pricing regime की अगर हम बात करें तो domestic gas prices they have increased for May, but CNG PNG revision it is unlikely. So price of the domestic natural gas for May it has been set at $8.27 per million British thermal units, and it is increased. So जो न्यू डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग फॉर्मूला है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड लास्ट मंथ एज पर नोटिफिकेशन issued by the oil ministry's petroleum planning and analysis cell. So despite the increase in the notified prices, consumers they will continue to be charged. So consumers के ऊपर जो charge किया जाएगा they'll have to just pay $6.5, and this is ceiling price as per the new pricing regime. So एक तो क्या चेंज किया गया है, फॉर्मूला का नाम क्या है वो इम्पोर्टेंट है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या चेंज किया गया है, दैट्स देयर. एंड इससे रिलेटेड जो कमेटी है किरिथ पार्क कमेटी, इसका मेंशन भी यहाँ किया गया है, दैट इज रिलेटेड टू द गैस प्राइसिंग. सो द रिवाइज्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ पैनल हेडेड बाय किरिथ पार्क. So for the gas produced by ONGC, Oil India, from their nomination fields, the above mentioned जो कि APM administered price mechanism price shall be subject to a ceiling of $6.5 for the period. So the price of the administered price mechanism gas, which accounts for about 2/3 of India's natural gas production hai, it was being determined as per the modified Rangarajan formula since November 1st, 2014. So यहाँ पे mention किया गया है key changes in the pricing regime includes. So अब जो change किए गए हैं उसमें benchmark किया गया है price of the administered price mechanism gas to the price of imported crude instead of the gas prices in 4 international gas hubs, trading hubs जो थे, and monthly rather than जो biannual revisions पहले की जाती थी. So पहले biannual revisions की जाती थी, अब monthly revision की जाएगी, and जो gas prices हैं उनको link किया गया है. They have been benchmarked with the imported crude oil prices. पहले जो benchmark किया जाता था price को, that was with the gas prices in 4 international gas trading hubs. So this is the change. And floor and ceiling price भी provide करता है. जो new change formula है उसमें floor price is $4, ceiling price is $6.5. So intention is shielding the consumers from high prices while ensuring कि जो producers हैं they are not forced to book losses on the gas sales. So दोनों front पे दोनों की considerations and interests they have been taken into account. Like जो consumers हैं उनको ज़्यादा volatility या high prices ना pay करना पड़े, and जो producers हैं उनको losses suffer ना करने पड़े. So that's the thing. सो रोड एंड हाईवे सेक्टर में सबसे ज्यादा डिलेड प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं इंडिया में. सो रोड में अगर हम बात करें नंबर ऑफ डिलेड प्रोजेक्ट्स, so आउट ऑफ 749 प्रोजेक्ट्स 402 डिले हुए हैं. रेलवेज में 173 में से 115 डिले हुए हैं, एंड पेट्रोलियम में 145 में से 86 वर डिलेड. So FII inflows जो अप्रैल में रहे they were highest since November 2022. So जो foreign institutional investors हैं we are seeing capital inflow in the Indian economy. तो उसके वजह से जो रुपी appreciation है वो ज़्यादा support हो पाएगा. एंड पिछले कुछ टाइम से बिकॉज जो कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था तो इंडियन रुपी वाज डेप्रिशिएटिंग, सो दैट वाज अनदर चैलेंज फॉर अस क्योंकि उसके वजह से इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं. सो this is the trend right now.
So estimates are that India's trade deficit and current account deficit it will be much lower in this fiscal, and currency it is likely to appreciate further. So क्योंकि inflow हो रहा है foreign currency of the capital into the Indian economy, तो उसकी वजह से Indian currency would get appreciated. So ये linkage, ये आपको कनेक्शन डिपेंडेंसी पता होना इंपॉर्टेंट है कि कैसे चीजें काम करती है व्हेन एक्सचेंज रेट या एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज कंसर्न्ड. So that's all for today. Thank you so much for joining us. And it was a long session. Hope you enjoyed and understood the things really well. And do subscribe to the channel, hit the like button for the videos that you watch. And we provide you every single day as far as the newspaper analysis is concerned. And again, thank you so much for joining us.